right now in Delhi, we are in the middle of a lockdown, and this is an unprecedented situation. This is not a situation any of us, any institution, any organization has ever dealt with before, and it's bringing up new, unique challenges. One of those is private school fees. Parents are complaining, they're going online to complain about school fees which are being asked for by private schools. We are simply, using the school as reference. We're not talking about the school in particular, but private schools in Delhi are still asking for fees, and parents ask why. मेरी सैलरी भी डिडक्ट होकर ही कंपनी से आएगी, क्योंकि हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम हैं फिलहाल. सो आई एक्सपेक्ट देयर विल बी लॉट ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम माय सैलरी आल्सो. और अब इस सिचुएशन में स्कूल वाले 3 महीने की एडवांस फीस के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कि अप्रैल से जून तक की होगी. और वो फीस में एनुअल फीस भी लगाई हुई है इन लोगों ने 13,200. ट्रांसपोर्ट फीस भी लगाई हुई है 12,000 पर चाइल्ड. अब मेरा सवाल इनसे ये है कि जब एनुअल फीस अभी सिचुएशन में तो आपको वो करनी चाहिए कम से कम, क्योंकि सभी पूरा ग्लोबली इट इज ए हेल्थ एज वेल एज फाइनेंशियल क्राइसिस गोइंग ऑन. तो थोड़ा सा लोगों को कंसिडरेट होना चाहिए, स्कूल वालों को भी कंसिडरेट होना चाहिए. गवर्नमेंट इतनी छूट दे रही है, इतना बैंक वाले भी इतनी छूट दे रहे हैं सभी को. ट्रांसपोर्ट फीस, जब आपका ट्रांसपोर्ट बंद है 100% लॉकडाउन सिचुएशन में, तो फिर 12,000 रुपये पर चाइल्ड ट्रांसपोर्ट फीस भी ले रहे हो. मतलब इन चीजों का कोई लॉजिक मुझे फिलहाल इस सिचुएशन में, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है, नहीं लग रहा है. वी एज ए पेरेंट वी आर अपीलिंग टू वेरियस अथॉरिटीज, लाइक हम लोगों ने सीएम को भी मैंने लिखा है, डिप्टी सीएम को भी लिखा है, बट मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है अभी तक. इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कैश बैलेंस करने के लिए, कैश फ्लो करने के लिए, अपने घर के खर्चे मैनेज करने के लिए बहुत बुरी तरह से शायद परेशान हो रहे होंगे. उनमें से मैं भी एक हूँ. तो इस सिचुएशन में अगर स्कूल कम से कम ये ट्रांसपोर्ट फीस वेव ऑफ करे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चालू नहीं है, बच्चे जा नहीं रहे हैं स्कूल, और ये एनुअल फीस एटलीस्ट वेव ऑफ करे इस साल के लिए, क्योंकि ये क्राइसिस का टाइम है. बाकी ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, टेक्निकल चार्जेस जो भी उन लोगों ने लगाए हुए हैं, दैट आई थिंक इट्स ओके, वी कैन पे दैट. उन लोगों ने कुछ क्लासेस ऑनलाइन देना शुरू किया है बच्चों को अभी, तो उसके लिए हम लोग ठीक है, ओके हैं. बट इफ दैट कैन बी कंसिडर्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर all the parents in this situation. So parents ask that we understand we must pay some amount, but surely in the middle of a lockdown, when everyone's earnings are at are in precarious situation, shouldn't there be some sort of concession, some sort of understanding? Why should we be charged for transportation? Why should we be charged all these other costs which are not really necessary? Surely there should be some sort of an understanding. But then here is a parent who says that her child has just joined preschool. Online classes really do not make much sense to her, and yet she still has to give this payment, this lump sum payment of 3 months. She's been asked for it by her school. मैम, मेरे पास 1 अप्रैल से मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है. मेरी बेटी प्ले स्कूल में है, और जो करिकुलम मुझे दिया गया था कि आप उसे टीवी या लैपटॉप या फोन के सामने बिठा दीजिए, एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा फॉर 5-10 मिनट्स. फिर हम आपको यूट्यूब लिंक्स दे देंगे और वर्कशीट्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे. आप उनके प्रिंट आउट्स निकालिए और बच्चों को वो कराते हुए वीडियो और फोटोग्राफ सेंड कर दीजिए हमें. मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरी बेटी प्ले स्कूल में है. सिर्फ 10 मिनट का टीचर इंटरेक्शन और बाकी सब काम मुझे करना है. मैं बच्चे को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे साथ में रहना पड़ेगा. मेड नहीं है घर में, बाकी सब काम भी है. बहुत मुश्किल है किसी भी होम मेकर के लिए ये सब कुछ करना मैनेज बच्चे के साथ. और सिर्फ 10 मिनट के इंटरेक्शन में आई वाज स्कैर्ड कि इसका मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो किसी भी टाइम फीस का आ जाएगा प्रेशर. एंड विद इन फ्यू डेज मेरे पास एक मैसेज आया कि 10 अप्रैल तक आप फीस सबमिट कर दीजिए. तो मैंने बात करी कि मैम, अप्रैल नए सेशन में मेरा बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं आया है. मार्च की फीस भी हमने पे की थी, सिर्फ 6 दिन बच्चा स्कूल गया था, और तब तो हम कुछ नहीं कर पाए. बट अभी आप फीस नहीं मांग सकते हो, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में.
मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ और ना ही मुझे लगता है कि मुझे लेनी चाहिए। इन दैट टू आप फुल फीस कैसे मांग सकते हो 8500? उसमें फूड भी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी आपका खर्चा है आप सब कुछ मिला के हमसे फीस लेते हो। अभी तो नथिंग इज बीइंग पेड बाय द स्कूल, सिर्फ सैलरीज है, तो आप पूरा का पूरा फीस कैसे मांग सकते हो हमसे? तो उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि हम आपका कंसर्न नोट कर रहे हैं, आगे से जो भी आएगा हम आपको बता देंगे। दे नेवर कॉल्ड मी बैक, बट मुझे जो अपने फ्रेंड सर्कल में पता चल रहा है कि मोस्टली हर स्कूल दिल्ली का, एनसीआर, ऑल ओवर इंडिया यही सब चल रहा है कि स्कूल फोर्स कर रहे हैं बच्चों को पेमेंट के लिए। कुछ लोग तो क्वार्टर फीस मांग रहे हैं फर्स्ट 3 months। Here is another parent who says that after repeatedly raising this as an issue with his school, the school listened and the payments have now been deferred for the parents. They can pay this later after the lockdown when they are able to. So the school has listened, but this parent asks that this should be a policy which is being followed throughout all private schools. It should be followed by all private schools. And it should be announced by the Delhi government, as it has been announced by several state governments that right now private schools cannot ask for fees. So, I am a salaried professional. I can pay the fees of my daughter. However, I know many of people who are from small business families whose business is not running these days, and they are finding it really difficult to pay school fees right now. As many government around India, be it Punjab, be it Himachal, be it Haryana, be it Noida administration, they have directed schools for not charging the fees till the normal functioning of schools are there. So I request Delhi government to take immediate steps in this direction. And also, I would like to tell you that schools have sufficient funds and they can really pay to their staff, so they are not dependent if they get fees, say for example 30 days from now if they get fees. So it's not true that they will not be able to pay salaries to their staff, since they have sufficient reserve funds in their banks. So all we are asking is deferring the payment. We are not asking for waiver of the payment. Also, I would like to tell you, my personal own experience that the school where my daughter is studying, they are, so generous. They are allowing parents to pay later in case they are finding it difficult to pay fees right now. However, I personally believe that Delhi government should act. I request Honorable Education Minister Shri Manish Sisodiya ji to act on this, and government should step in and they should direct schools not to ask parents, not to compel parents who are not able to pay fees right now till the normal functioning of schools are there in Delhi. So I have gotten in touch with these schools in question, and they say that they are going to completely comply with any directive from the administration if and when there is such a notification from the administration. And until then, parents can raise their concerns with the schools. So it really sounds like the government needs to come out at this point and say that private schools should not be asking for fees right now in the middle of this lockdown. They should be deferred, if not waived, or there should be some concessions, but it really needs to come from the top. Otherwise, there doesn't seem to be much of a hope in this situation. This is Suryatapa Mukherjee for Mojo.